Morning all participants. On behalf of Indian Railway Institute of Financial Management, Secunderabad, I extend warm welcome to each one of you for online training course for 2A aspirants for 2 weeks starting from today. This training course will be for 2 weeks from today. It will be up to 25th February 2022. We'll have 2 sessions every day. That is first half. From tomorrow onwards, please note the timings. The first session starts at 9:45. It will be up to 11:30. You have pre-break 15 minutes. The second session starts at 11:45. It will be up to 1:30. Please note, tomorrow onwards, the first session starts at 9:45. From 9:45 to 11:30, and then tea break, and then second session starts at 11:45. It will be up to 1:30. Please make use of this platform. Thank you all. Today's topic is structure of railway accounts, and to take up this session, we have Shri Damodar Prasad. He is retired as senior AFA South Central Railway. Welcome, sir, and it's over to you to comment the session. Thank you, Benhar. A warm welcome to all the participants. Please make use of these sessions. It will be helpful for writing your 2A examination, and these sessions were structured in such a way that it will be easy for you. Once you listen, it will be easy for you to write your 2A examination. So let us start our session without much time lapse. Actually, being in accounts, we should know how the railway accounts are structured, how we will be maintaining these accounts. We should also know whether any change is there with reference to, say, a private organization, a commercial enterprises, how they work, and is there any difference with reference to railway accounts. So these are the important topics, because this is the fundamental topic. ये जानकारी होने के बाद आपको हर एक चीज का डिटेल्ड सेशंस आप सुनने के वास्ते आपको बहुत आसानी होता है. सो ये पहले स्ट्रक्चर ऑफ रेलवे अकाउंट्स वो कैसा है, कैसा हम मेंटेन करते हैं, अब पहले ये सुन लीजिएगा. प्लीज लिसन दिस वेरी केयरफुली सो दैट फर्दर सेशंस यू विल बी इजीली अंडरस्टैंडिंग. एक्चुअली हमारा रेलवे का पहले ये ओनरशिप किसका है, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का है, गवर्नमेंट का है. ये पहले हमारे को बहुत विस्तृत जानकारी होना चाहिए, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट ओनली देयर विल बी आवर स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंट्स. वी हैव टू प्रिपेयर एंड मेंटेन दोज अकाउंट्स. सो व्हाट इज दिस रेलवे? ओके, फर्स्ट लेट अस सी. इंडियन रेलवे हमारा अकाउंट्स कोड में, ये तो अकाउंट्स कोड होते हैं, वो महत्वपूर्ण होते हैं हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के वास्ते. इसके अलावा हमें फाइनेंस कोड भी देखते हैं. कभी कभी फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन वगैरह जानने के वास्ते हमें इंजीनियरिंग कोड भी देखते हैं. बट हमारा रेलवे अकाउंट्स के बारे में अकाउंट्स कोड वॉल्यूम 1 ये तो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. तो उस कोड में ये लिखा है कि इंडियन रेलवे इज ए डिपार्टमेंटल कमर्शियल एंटरप्राइज. इंडियन रेलवे इज ए डिपार्टमेंटल कमर्शियल एंटरप्राइज. यानी ये नाम सुनने के बाद आपको क्या होता है, ये क्या है, ये स्फिंक्स जैसा है. एक तरफ डिपार्टमेंट बोल रहा है और दूसरा तरफ कमर्शियल है. या क्या यह सही है? ऐसा दुविधा है क्या हमारा रेलवे का सिस्टम में? यस, हमारा रेलवे it is not purely government department. At the same time,
हमारा रेलवे एक प्योरली कमर्शियल एंटरप्राइज जैसा भी नहीं होता है। हमें खुद ये डिपार्टमेंटल का क्या जरूरतें हैं, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का क्या जरूरतें हैं, ये दोनों बैलेंस करके हमें हमारा रेलवे अकाउंट्स को मेंटेन करना है। बिकॉज हमारा अकाउंट्स कोड में ये इंडियन रेलवे इज ट्रीटेड एज ए डिपार्टमेंटल कमर्शियल एंटरप्राइज। हमारा गवर्नमेंट में आप देखिएगा कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें हमारा रेलवे भी एक है, मगर वो डिपार्टमेंट्स को थोड़ा से some departments will be general departments, some departments will be purely service करते हैं, वो सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं। और तीसरा तरीके का डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट में, वो कमर्शियल डिपार्टमेंट्स होते हैं। वैसा कमर्शियल डिपार्टमेंट्स में हमारा रेलवे भी एक है, बिकॉज हमारा रेलवे कमर्शियल डिपार्टमेंट जैसा मान लिया, इसीलिए हमें हमारा अकाउंट्स कोड में भी इंडियन रेलवे इज ट्रीटेड एज डिपार्टमेंटल कमर्शियल एंटरप्राइज। बिकॉज हमारा रेलवे डिपार्टमेंट को वो जो कैटेगरी में लाया वो कमर्शियल कैटेगरी में लाया। तो ये कमर्शियल डिपार्टमेंट्स, रेलवे जैसे कमर्शियल डिपार्टमेंट्स इन द गवर्नमेंट, they have to perform functions which are not necessarily government functions। माने तो गवर्नमेंट फंक्शंस करना है, फिर भी उसमें एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस का जो सैलिएंट फीचर्स है, इंपॉर्टेंट फीचर्स है, वो फीचर्स हम यूज करते हैं। So by this you will understand that Indian Railway ownership lies with Government of India. Therefore, it will be a government department. But at the same time, Indian Railway has been categorized as a commercial department. A commercial department होने के नाते ये गवर्नमेंट का फंक्शंस को पालन करना और कमर्शियल डिपार्टमेंट का जो सैलिएंट फीचर्स है वो भी हमें पालन करना है। ये बैलेंस हमें रखना चाहिए। दैट मीन्स वो जो कमर्शियल डिपार्टमेंट का, कमर्शियल अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल्स है, वो प्रिंसिपल्स हमें इस्तेमाल करते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का, गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम का जो सैलिएंट फीचर्स है, जो गवर्नमेंट बोलते हैं, we have to follow them. So both we have to follow. आखिर ये कमर्शियल डिपार्टमेंट में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या अकाउंटिंग सिस्टम में क्या अंतर होते हैं, दैट वी विल नो। वंस वी आर क्लियर अबाउट दिस, देन बहुत आसानी से दूसरे सेशंस आपको आसानी से सुन सकते हैं। तो रेलवे एक कमर्शियल अकाउंटिंग का सिस्टम का पालन करना, क्योंकि उसमें क्या है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम होते हैं। वो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, बिकॉज हमारा रेलवे एक कमर्शियल डिपार्टमेंट है, तो इसीलिए वो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पालन करते हैं। और एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को क्या होते हैं, उसका प्रॉफिट मोटो होते हैं। यहाँ भी हम रेलवे चलाने में प्रॉफिट का मोटो भी देखते हैं, मगर प्रॉफिट नहीं आए तो हमारा सर्विसेज बंद नहीं करते। यही है तरीका एक कमर्शियल डिपार्टमेंट, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैटेगराइज्ड एज कमर्शियल एंटरप्राइज का, ये इतना ही अंतर होते हैं। दैट मीन्स और गवर्नमेंट अकाउंटिंग का प्रैक्टिसेस जो भी है हमें पालन करते हैं। दैट मीन्स the railway will work as a commercial enterprise
and at the same time it will follow the requirements of government accounting. आखिर ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग का क्या होना है? The basic difference is government accounts are kept on cash basis. Government accounts कवर कैश बेसिस में रखते हैं. ये यही है मेन डिफरेंस. हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रेलवे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होने के नाते it has to maintain its accounts on cash basis. ये कैश बेसिस क्या होते हैं? पहले ये जानकारी हुआ तो दूसरे का पार्ट हमें इजी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं. देखिएगा, हमारा को से अर्निंग्स आ रहा है, ये महीने में आ रहा है और ये साल में आ रहे हैं. तो वो साल में जो भी अर्निंग्स आते हैं वो पूरा वही महीने में, वही साल में, in the same year, in the same month, if we account only when the cash is received. Sometimes we will be giving some vouchers, voucher facility we will give to some departments. For some private firms will give credit note facility also. So in such cases, हमारा पूरा earnings वो कैश में आ रहे हैं बोल के नहीं बोल सकते. तो इसीलिए जो भी कैश में आते हैं, जो भी एक्चुअल रियलाइजेशन होते हैं, that only will be treated as government receipt and it has to be accounted in government accounting. Similarly, expenditure में देखिएगा, expenditure में जो expenditure एकदम clearly वो पेमेंट होते हैं, that only will be treated as payment disbursed. आपको शक आएगा कि सर वो कैसा होते हैं, हमें जो चेक्स देते हैं वो पूरा चेक्स उन लोग लेते हैं ना, तो पेमेंट क्यों नहीं होता है? Actually it is not so. When we give check immediately, will they may not present in the bank, or because of giving the correct account, it may come back to us also. Similarly, हमारा that will be done in the next month or next year also. So that means to that extent वो पेमेंट नहीं हुआ, वो डिस्बर्समेंट नहीं हुआ. तो ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, एक्चुअली जितना अमाउंट डिसबर्स हुआ है वो अमाउंट ही हमें अकाउंट करना है. हमें चेक्स दे चुके हैं मगर पेमेंट नहीं हुआ तो हमें नहीं लेना है. और एक सुविधा, एक एग्जांपल आपको बताता हूं. हमारा मार्च का सैलरी आपको कब मिल रही? मार्च का सैलरी आपको मिलेगा अप्रैल में मिलेगा, मगर हमारा गवर्नमेंट अकाउंटिंग में जो भी एक्चुअल डिसबर्स हुआ वही अमाउंट हमें अकाउंट में लेना है, हमें गवर्नमेंट अकाउंटिंग में बताना है. तो जो भी मार्च का सैलरीज है, लेट इट बी 200 crores और 2000 crores, वो पूरे का अमाउंट कहाँ, ये पूरे का अमाउंट ये डिसबर्स हुआ क्या? मार्च में नहीं हुआ. तो जो मार्च में नहीं हुआ वो हमारा एक्सपेंडिचर में नहीं लेना है. गवर्नमेंट अकाउंट, गवर्नमेंट को सबमिट करने का अकाउंट में ये अमाउंट नहीं लेना है. तो इसीलिए थोड़ा ये कैश बेसिस का प्रॉब्लम ये होते हैं कि हमें कहीं कहीं एक जगह पे ये जो एक्सपेंडिचर खर्च किए मगर पेमेंट नहीं हुआ, तो वैसा अमाउंट्स एक जगह पे रखना चाहिए. सिमिलरली हमारा अर्निंग्स साइड भी, हमारे को अर्निंग्स आता है मगर वो अर्निंग्स पूरा रियलाइज नहीं होते हैं. तो वो जानकारी होने के नाते और कुछ अलग तरीके से हमारा अकाउंट्स बनाना है.
वो कैसा बनाना है हमारे आपको मैं पूरा जानकारी ये देता हूँ। तो हमारा इस पहले आपको क्या समझना है कि गवर्नमेंट अकाउंट्स ऑलवेज दे आर केप्ट ऑन कैश बेसिस। दैट मीन्स जो रिसीट्स आएगा, एक्चुअल रिसीट्स हमें हमारा रिसीट और हमारा रिसीट और हमारा अर्निंग्स में बताते हैं गवर्नमेंट को देने का अकाउंट में। सिमिलरली जो भी खर्च करना है पेमेंट साइड भी, एक्चुअल डिसबर्समेंट जितना होते हैं वो महीने में या नहीं है तो वो साल में जितना होते हैं, दैट अमाउंट only will be shown as disbursement or payment. So to have the other part of that actual हमारे को जानकारी होना चाहिए। तो वो अकाउंट्स कैसा बनाना है, पूरे का रिसीट्स हमारे को पता होना चाहिए, उसमें एक्चुअल कितना आया वो भी पता होना चाहिए। सिमिलरली हमारा एक्सपेंडिचर जितना खर्च किए और वो एक्सपेंडिचर में जितना एक्चुअली डिसबर्स हुआ वो जानकारी होना चाहिए। बिकॉज हमारा गवर्नमेंट अकाउंट्स को एक्चुअल बेसिस और कैश बेसिस में हमारा अकाउंट ट्रांसैक्शंस बताना है। वो कैसा करेंगे वो देखेंगे। और दिस इज एक्चुअल रिसीट्स एंड एक्चुअल आउटगोइंग्स, वो बताना गवर्नमेंट अकाउंटिंग का सिस्टम होते हैं। और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का क्या होते हैं, वो एक्रूवल बेसिस होते हैं। ये दो शब्द कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस, ये ही है महत्वपूर्ण डिफरेंस होते हैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग का और कमर्शियल अकाउंटिंग का डिफरेंस। और बहुत सारे डिफरेंसेस है, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज दैट गवर्नमेंट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड ऑन एक्चुअल बेसिस और कैश बेसिस। जितना एक्चुअल रिसीट आया उतना ही बताना है गवर्नमेंट को, जितना एक्सपेंडिचर एक्चुअली डिस्बर्स हुआ उतना ही बताना है। दैट इज गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। अगर कमर्शियल अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज हमारा रेलवे डिपार्टमेंटल कमर्शियल एंटरप्राइज, सो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल बेसिस में अकाउंट्स मेंटेन करना है। वो एक्रूवल बेसिस में अकाउंट्स मेंटेन करना है बोले तो क्या क्या चेंज होते हैं। सो ये एक्रूवल बेसिस में क्या होते हैं, पूरे के पूरे हमारा रिसीट्स है, हमारा अर्निंग्स है, पूरे के पूरे उसमें जानकारी होना चाहिए। हमारा पूरा अर्निंग्स 100 रुपीज समझिएगा, वो पूरा 100 रुपीज कहीं एक जगह पे हमें एज ए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हमें दिखाना है। वो अर्निंग्स में एक्चुअल रिसीट हुआ 90 रुपीज, वो 90 रुपीज गवर्नमेंट अकाउंट को हमें देते हैं। वो 90 रुपीज कहाँ एक जगह पे हमें लिखना है, बाद में 100 माइनस 90 10 रुपीज ये और हमें रिसीव करना है, हमें रियलाइज करना है। ये जानकारी होने के वास्ते दैट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड कमर्शियल अकाउंटिंग सिस्टम, दैट इज एक्रूवल बेसिस। वो एक्रूवल बेसिस का होते हैं। सिमिलरली हमारा रिसीट साइड भी देखिएगा, हमारा रिसीट साइड कुछ चीजें ऐसे होते हैं कि हमें बिल बना के दूसरे फर्म्स को बेचते हैं, मगर वो अमाउंट पेमेंट करने तक हमें वॉच करना है। तो एक जगह पे रख के वॉच करना है। एक्चुअली जितना अमाउंट आया वो गवर्नमेंट अकाउंट में दिखाना है, दूसरा जो बाकी है वो एक कहीं एक जगह पे रख के हमें वॉच करना है। सिमिलरली हमारा ट्रैफिक अर्निंग्स का भी मैंने बता दी, कुछ
वाउचर्स, क्रेडिट नोट्स वैसा सुविधा देते हैं। तो वो पूरा अर्निंग्स में आते हैं, मगर वो पेमेंट करने के बाद वो एक्चुअल रिसीट्स में आते हैं, तब गवर्नमेंट अकाउंटिंग को बताना है। तो दैट विल बी कॉल्ड मेंटेनिंग आवर अकाउंट्स ऑन एक्रूवल बेसिस। तो हमारा रेलवे, इट इज बीइंग कैटेगराइज्ड एज ए कमर्शियल डिपार्टमेंट। हमारा अकाउंट्स वी हैव टू मेंटेन इन 2 ways. One way to satisfy government accounting system, another way to satisfy commercial organization system. आखिर ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग का और कमर्शियल अकाउंटिंग का क्या डिफरेंस है? मेजर डिफरेंस यही होते हैं कि कमर्शियल, ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग का सिस्टम एक्चुअल कैश बेसिस में होते हैं। कैश बेसिस माने एक्चुअल रिसीट्स, एक्चुअल डिसबर्समेंट्स हमें बताते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते हमें पूरे अर्निंग्स जितना है उसमें एक्चुअल रियलाइजेशन जितना है और बाकी का रियलाइज करना जितना है, ये जानकारी करने के वास्ते हमारा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का वन सेक सॉरी। सो हमारे को ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स एसेंशियल प्रिंसिपल्स हमें पालन करना है। तो इसीलिए पूरे अर्निंग्स जितना है हमारा रेलवे का और उसमें जितना रियलाइज हुआ वो गवर्नमेंट को बताते हैं और जितना बाकी है एक जगह पे हमें अकाउंट करना है। सो दैट विल बी डन। और दूसरे अर्निंग्स और एक्सपेंडिचर साइड भी मैं बता दी। पूरे के पूरे हमारा जो भी चेक्स देते हैं वो पूरा एक्सपेंडिचर नहीं मान सकते हैं। एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा पूरे के पूरे डिसबर्समेंट नहीं होते हैं। जो डिस्पर्स हुआ that only will be treated as actual disbursement. That only we will indicate to Government of India. Actual disbursement कितना हुआ उतना ही हमारा एक्सपेंडिचर बोल के हमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बताते हैं। मगर एज ए कमर्शियल डिपार्टमेंट वी शुड नो हाउ मच इज एट टू बी डिस्पर्स्ड। जैसा मैंने बता दी, मार्च महीने का सैलरी हमारे को मार्च महीने में नहीं होते हैं, मगर मार्च महीने में एक्सपेंडिचर हमें दिखाते हैं। मगर डिस्बर्समेंट कब होते हैं? वो मार्च महीने का एक्सपेंडिचर अप्रैल में होते हैं। गवर्नमेंट अकाउंट को बताने में मैं मार्च का जो भी सैलरी का एक्सपेंडिचर है मैं नहीं बताता हूँ गवर्नमेंट को, क्योंकि वो डिसबर्स नहीं हुआ। एक्चुअल बेसिस में होना है। एक्चुअली डिसबर्स नहीं हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है मगर डिसबर्स नहीं हुआ, तो इसलिए मैं नहीं बताता हूँ गवर्नमेंट अकाउंट को, गवर्नमेंट को बताने एक्सपेंडिचर में। मगर एज ए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन आई शुड नो फॉर मार्च हाउ मच सैलरी आई नीड टू पे। सो दैट how this balance will be maintained, I'll let you know. Then और accounting method ये होते हैं कि मोस्टली हमारा गवर्नमेंट अकाउंट्स जो भी जनरल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो भी सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो सिंगल एंट्री का होते हैं, क्योंकि उसका बैलेंस करके और दूसरे नेक्स्ट ईयर को ले जाना उतना जरूरत नहीं होते है। बट ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो रेलवे, जो डिपार्टमेंट्स, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स
कमर्शियल डिपार्टमेंट जैसा कैटेगराइजेशन किया, उन लोग ने कमर्शियल डिपार्टमेंट लाइक IR and PSUs, they will maintain double entry bookkeeping system. इसीलिए हमारा रेलवे में हमें प्योरली ऑन कमर्शियल डिपार्टमेंट, एक कमर्शियल बाहर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कैसा डबल एंट्री बुक कीपिंग यूज करते हैं, हमारा रेलवे में भी हमें डबल एंट्री बुक कीपिंग का सिस्टम इस्तेमाल करते हैं. So that is accounting method. So when if someone asks you what is the main difference between government account and commercial accounting, government accounting purely cash basis, actually जितना receipt आया, actually जितना expenditure किया वही government को बताते हैं. और मुख्य चीज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का क्या होते हैं, दैट विल बी ऑन एक्रूअल बेसिस. एक्रूअल बेसिस माने तो जो वो एक्चुअल रिसीट नहीं हुआ, एक्चुअल डिस्पर्स नहीं हुआ, तो भी हमें अर्निंग्स और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें लेना है, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट को जितना बताना है और जितना बैलेंस है हमारे को जानकारी होना चाहिए. तो इसलिए हमें ये करते हैं कि हमारा गवर्नमेंट अकाउंट्स एक्चुअल बेसिस और कैश बेसिस में करते हैं. कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन तरफ हमें एक्रूअल बेसिस में भी हमें हमारा अकाउंट्स मेंटेन करते हैं. और अकाउंटिंग सिस्टम में मेन डिफरेंस ये है कि other departments mostly they will be having single entry bookkeeping, whereas the commercial departments like Indian Railway and other public sector organizations, they will maintain their accounts on commercial on double entry bookkeeping. So हमारा रेलवे में डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम मानते हैं, इस्तेमाल करते हैं. ओके, नाउ I was telling you that there are the major difference I told you. One is हमारा गवर्नमेंट अकाउंटिंग में वो कैश बेसिस में होते हैं, that is actual receipt, actual disbursement होते हैं, और कमर्शियल डिपार्टमेंट में वो एक्रूअल बेसिस होते हैं. That means whether realized or not, वो अर्निंग्स में बताना है. एक्सपेंडिचर में जो एक्सपेंडिचर एक्चुअली डिस्बर्स हुआ या नहीं हुआ, एक्सपेंडिचर होते के नाते वो बताना है कमर्शियल अकाउंटिंग में. दैट इज कॉल्ड एज एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट आई टोल्ड, मोस्ट ऑफ द जनरल डिपार्टमेंट्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स they will have the accounting method as single entry system, whereas railway being a government department and categorized as a commercial organization, it will work as double entry bookkeeping system हमें इस्तेमाल करते हैं. Whereas other government department, actually commercial accounting में purely double entry bookkeeping system होते हैं. और इसके अलावा क्या क्या डिफरेंसेस है, आपको एग्जामिनेशन में कभी कभी एक डिस्टिंग्विश बिटवीन गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड कमर्शियल अकाउंटिंग, दैट क्वेश्चन दे मे गिव, सो दैट दिस टेबल विल हेल्प यू. क्या होते हैं हमारा गवर्नमेंट अकाउंटिंग का और कमर्शियल में क्या होते हैं वो देखिएगा. गवर्नमेंट अकाउंट्स, वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द पर्पस. हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का पहले वेलफेयर स्कीम्स बनाते हैं, उसके बाद में उसका पैसे कहाँ से लाना है, टैक्सिंग जितना तक हमें कर सकते हैं, बाद में लोन्स बाहर से कुछ लेना है क्या, तो वैसा बजट बनाते हैं. तो वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द पर्पस हमारा गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम का. पैसे आ रहे पैसे जा रहे वैसा कभी नहीं सोचते. हमारा पीपल के वास्ते क्या करना है, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम. जो हमें खर्च करते हैं वो पर्टिकुलर सिस्टम रहते हैं रिकॉर्डिंग का वास्ते, एक्सपेंडिचर रिकॉर्डिंग के वास्ते और अर्निंग्स रिकॉर्डिंग के वास्ते एक पर्टिकुलर सिस्टम रहते हैं.
So that particular system we have to follow. So welfare of the people is the purpose of the government accounts, and how much little money can be taken from the taxpayer is the aim. मैंने बता दी ना. So पहले वेलफेयर स्कीम्स बनाते हैं. ये वेलफेयर स्कीम इंप्लीमेंट करने के वास्ते जितना पैसे होना चाहिए, वो पैसे कहाँ से लाना? हमारा टैक्स से जाता है, डायरेक्ट टैक्स से जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स से जाता है. तो डायरेक्ट टैक्स में जितना तक हमें पाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स से जितना आते हैं. बाद में अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ तो लोन्स लेना पड़ता है. इसीलिए हमें वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं और दूसरे कहीं डिपार्टमेंट से लोन लेते हैं. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. never we will go start with how much money is available with us. In a government accounting, never it will start work like that. पहले हमारा पीपल के वास्ते, हमारे प्रजा के वास्ते क्या वेलफेयर स्कीम्स लाना है, जितना हमें खर्च करना है आवास के वास्ते, रोजगार के वास्ते, how much we have to spend, and then वो खर्च पहले फिक्स होते हैं. बाद में क्या होते हैं, how much little money can be taken from the tax. हाँ, इतना खर्च हो रहा है तो इसलिए इतना बड़ा टैक्स बनना नहीं. पैसे कहाँ, इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट ऑफिसेस उतना टैक्स नहीं बन पाते, तो इसलिए जितना लिटिल अमाउंट्स लेना है उतना ही लेना है. मगर आइए राइट साइड, एक कमर्शियल अकाउंट में क्या होते हैं, हमें पहले इतना पैसे हमें ऑर्गेनाइजेशन में रखे हैं, इंडस्ट्री में रखे हैं, इसके ऊपर हमारे को जितना प्रॉफिट होता है इतना मैक्सिमम जितना आते हैं उतना खींचना है. वैसा होते हैं कमर्शियल अकाउंटिंग का मेन मतलब ये होते हैं, पर्पस ये होते हैं. यहाँ पर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट इज द गोल. हाउ मच हमें अर्न कर सकते हैं, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द कमर्शियल organization. So then government accounting, already I told, mostly single entry. हमारा रेलवे डिपार्टमेंट जैसा उन लोग डबल एंट्री का सिस्टम अडॉप्ट करते हैं. एंड इवन दो डबल एंट्री का सिस्टम अडॉप्ट करते हैं कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन तरह, यहाँ पर प्रॉफिट नॉट इंसिस्टेड अपॉन. ये काम हमें प्रॉफिट आते ही हमें करते हैं, नहीं तो नहीं करते. से फॉर एग्जांपल हमारा रेलवे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट आते ही हमें जिन मार्ग में, जिन रेल में, ट्रेन्स में प्रॉफिट आते हैं वही हमें चलाते हैं, दूसरे जगह पे हमें नहीं चलाते. Never railway will insist like that. Yes. So here profit is not instituted, but we also look for profit. That is different. हमारे को जितना हमें कॉस्टिंग में जितना कॉस्ट हमें खर्च करते हैं. Sir, excuse me. Yes, please. Sir, participants even wants in English also. Please, use English also. अच्छा, reverse it is going. Okay. Yes, English and Hindi, please. Okay. Please. Yeah, thank you. So there also profit हमें इंसिस्ट नहीं करते हैं, मगर ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में डबल एंट्री सिस्टम that already we know, but here profit is insisted. If profit is not there, then the scheme will not be taken. They will not put that money in that scheme. They will take out from that industry and they will use it somewhere else. But government department, it will not do like that. Or form and classification of accounts maintained in consultation with C&G. हमारा गवर्नमेंट अकाउंट्स जिस तरह
हमें मेंटेन करना है, जिस तरफ रिपोर्ट करना है, this will be done by Controller General of Account, CGA बोलते हैं. So CGA will decide, but that decision will be taken in consultation with C&AG, Controller and Auditor General of India. So the form in which we have to maintain our accounts and classification of accounts, that also it will be maintained in that. Maintain करने का कौन सी क्लासिफिकेशन होते हैं वो पूरा C&AG के कंसल्ट करके वैसा ही हमें अकाउंट्स मेंटेन करते हैं. बट नॉर्मली इन कमर्शियल अकाउंट्स में चीफ ऑफ द अकाउंट्स हेड विल डू दैट पर्टिकुलर जॉब. वो अकाउंट्स का हेड, सो CFO बोलते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वैसा होते हैं, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर होते हैं. सो दैट ऑर्गेनाइजेशन में वो कमर्शियल डिपार्टमेंट, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड ऑफ द अकाउंट्स डिपार्टमेंट होते हैं उन्हें फिक्स करते हैं, वैसा ही अकाउंट्स मेंटेन होते रहता है. मगर यहाँ पर तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग में C&AG वैसा डिजाइन करते हैं फॉर्म और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. ऐसा मेजर हेड्स होना है, ऐसा डिमांड्स होना है, ऐसा सब मेजर हेड्स होना है, ऐसा माइनर हेड्स होना है, ऐसा सब हेड्स होना है, ऐसा डिटेल हेड्स होना है, प्राइमरी यूनिट्स होना है. तो वैसा क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए, वो कितना डिजिट्स होना चाहिए, ये पूरे हमारा C&AG will decide, and that will be given to us and we have to follow. Then another one is the structure and pattern of accounts is one and the same for any government department, because all government accounts, they have to be compiled, and जितना actual receipts है, जितना actual disbursement है, that it should be shown to the government of India. And government of India, receipts and expenditure, actual receipts and actual expenditure, in the Ministry of Finance एक department होते हैं. That department we call it as a Department of Expenditure. वहाँ पर ways and means position बोलते हैं. ये ways and means position उन्हें prepare करके कैबिनेट को भेजते हैं. उन लोग रिव्यू करते रहते हैं. जितना वेज एंड मीन्स माने तो जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, जितना रिसीट्स आ रहे, वो बैलेंसिंग हो रहे या नहीं, तो एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे या रिसीट्स ज्यादा हो रहे, तो दैट बैलेंसिंग पोजीशन will be seen through ways and means position. So that is why always the structure or pattern of accounts should be same either in Indian Railway or in other departments, but they will be given separate headings. So as per that heading, they have to maintain that. But the structure of the accounts is uniform. आपको पता लग जाए कि सर द स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंट्स हम वो कैसा एक all departments how they will follow, they say same structure. I'll tell you how will it be done. Okay, then if you come to commercial accounting, then it differs from organization to organization. Okay, now one more difference is the auditing is done by C&AG organization. हमारा government accounting में that government accounting auditing will be done by Controller and Auditor General of India. Whereas if you go to commercial enterprises, that will be done by chartered accounts as per the company law. Auditing will be done by external organization. Here also it will be done by external organization only, but it is a constitutional organization. That means the Controller and Auditor General of India, that organization, it is constitutional obligation, and they will be doing auditing of the government accounts. A commercial accounts का वो कंपनी का कंपनी लॉ के अंदर chartered accountants करते हैं. Next, generally the accounting ends with financial year
except the commercial departments like Indian Railway. Normally, जो भी ये single entry का system होते हैं, that there it will end with financial year. All the accounts, government accounts, they will end with financial year. एक financial year हुआ, जो expenditure हुआ, खत्म, वो लेके जाते. जो receipt आए, वो receipt government का receipt होते हैं. जो expenditure है, वो government का expenditure होते हैं. There ends the matter. But in Indian Railway also, being a government department, we also follow the same way, except for certain items where suspense accounts are operated, those suspense heads will be carried forward. Say for example, हमारा earnings होते हैं, हमारा earnings जो साल का हुआ, वो साल का ही account होते हैं. जो नहीं रिसीट किया, actual realization नहीं हुआ, so those amounts it will be carried forward and then realization will be watched. Similarly, हमारा expenditure जो है, जो that expenditure whatever हमारा suppose revenue expenditure है, हमारा government का capital expenditure है, so that capital expenditure and the revenue expenditure that will end in that year only. Why it will end in that year only? Because the budget is for that year only. Budget will not be carried forward to the next year. Next year, for next year expenditure, again for next year receipts, you will prepare one more budget and you will present to the parliament. So the financial year is basically it will all accounting system, it will end there. But in railway, we maintain certain suspense accounts. So those suspense accounts, they will be carried forward. But in commercial accounts, the balances are carried forward from year to year. So profits, पूरा capital के रूप में that will be carried forward to the next year also. Then already I told cash-based accounting in government accounting and accrual-based accounting in commercial accounting. And another important point is that the finances will be controlled by parliament in government accounting system. That means the amount of expenditure, it will be voted by parliament and the parliament approval is required. And again, after giving the funds for the next year and we will be using them, वो यूज करने के बाद at the end of the year, वो year complete होने के बाद, at the end of the year, we will have to give them account. That kind of system is there in government accounts. So the government accounts are governed by parliament. Without approval of parliament, no money can be taken. No money can be incurred. No expenditure can be incurred. So that is why the parliamentary control is there. Here in commercial organization, governed by the laws of the land. Company law होते हैं. So according to that law, the organization has to run. बाहर का जो भी commercial organizations है, they will be governed by laws of the land. Then coming to the government accounts, they will prepare receipt and payment accounts. Wherever receipt or wherever payment is there, so this receipt and payments accounts are prepared. But whereas in commercial accounts, in addition to receipt and payment account, they will also maintain P&L account and balance sheet. These are prepared. Now, please understand that the railway, Indian Railways, being a government accounting system and being categorized as a commercial organization, they will follow both the systems. That is the beauty of our railway accounting structure. हमारा railway accounting का structure का beauty यही होता है. We will take
the essential features of the government accounting system, as well as we will follow the essential principles of the commercial accounting system as far as possible. हम ये दोनों इस्तेमाल करते हैं. When you want to show your actual receipts and actual disbursements, we will follow government accounting system and we will give to government. As a commercial organization, if you want to show how much is your profit and profit or loss account, we will prepare profit and loss account also. Many of you may not be aware. We will also prepare balance sheet for the railway, zonal railway, we will prepare. So this is how the essential features of commercial organization outside government accounting we will maintain that. And for government accounting, essentially government account जो भी prescribe करेगा, वो purely all that will be giving to the government of India. So this is the government accounting and commercial accounts. And you should keep in mind that the railway, being a departmental commercial enterprise, they will follow both the essential features of government accounting as well as commercial accounting. क्या difference है? इतना ही. When we are reporting to government, we will show on actual basis. When we are reporting as a commercial organization, we will report as on accrual basis. इतना ही फर्क है. Okay. Now, having learned this, now we will see how this organization will follow essential features of government accounting system, हमारा railway. So accounts of the railway are kept on commercial basis outside regular government, that already I told. And ये तो accrual basis में होते हैं ना commercial का, तो government को क्या होना है, actual basis होना है. तो इन लोगों ये दोनों का लिंक कैसा करते हैं. हमारे अर्निंग्स 100 रुपीस है, एक्चुअल रिसीट्स 90 रुपीस है. ये 90 रुपीस कहाँ पर वी हैव टू मेंटेन सम लिस्ट. सो कहाँ पर करते हैं. फॉर दैट ये लिंक विल बी मेंटेन्ड बाय ऑपरेटिंग ए फ्यू सस्पेंस हेड्स. अभी थोड़ा अंदर मैं जा रहा हूँ, तो try to understand. The accounts of the railway are kept on commercial basis outside, because we should know how much actual earnings and how much actual total earnings and total expenditure we should know. But actually हमारे को जितना receipt आ रहा है, जितना actual disperse हुआ, वो जानकारी करने के वास्ते we have to maintain a link. So that link, because that only we have to give to government accounting, government को हमें बताना है. So that we to know out of our actual total earnings, actual receipts जितना है and बाकी जितना है, a link suspense heads will be maintained. Similarly, expenditure side भी हमें खर्च किया है, ठीक है, but how much actually spent, actually dispersed, to maintain that, to know that, a link head will be maintained. Those link heads we will know very clearly. Then only you will understand that हमारा railway accounts जितना महत्वपूर्ण होते हैं. Because I said we will maintain cash basis as well as actual basis also. Actual basis also and commercial basis, accrual basis also. And actual जितना आया, actually accrual कितना हुआ, वो जानकारी करने के वास्ते we have to maintain certain link suspense heads. These suspense heads we call them as link heads. क्या क्या link heads हमें maintain करते हैं, वो हमें बताते हैं. The object of the government account is how much money is coming into government.
through railway revenues. That means हमारा earnings, हमारा railway का earnings जितना है, वो पूरा earnings जितना हमारा railways को railway के रूप में हमारा government of India को जितना earnings revenues आते हैं, how much is coming into government of India, because the owner is government, so government उन्हें पैसे इसमें लगाते हैं, तो जितना अमाउंट हमें अर्निंग करते हैं वो अर्निंग में जितना एक्चुअल रिसीट होते हैं दैट विल फ्लो फ्रॉम रेलवेज. क्या क्या रेवेन्यू आते हैं रेलवे से गवर्नमेंट को? कोचिंग अर्निंग्स आते हैं, अदर कोचिंग अर्निंग्स आते हैं, गुड्स अर्निंग्स आते हैं, सन्ड्री और अदर अर्निंग्स आते हैं. वो पूरा अर्निंग्स हमें गवर्नमेंट को देते हैं, एक्चुअल रिसीट्स देते हैं. जितना अर्न किया वो अलग, वो लिंक हेड में लगा के हमें देखते हैं, मगर उसमें से एक्चुअल रिसीट कितना हुआ वो हमारे गवर्नमेंट को बताने के वास्ते दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम रेलवेज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हाट आर द रेवेन्यू, व्हाट आर द रिसीट्स? इट इज नथिंग बट द रेवेन्यू ऑफ रेलवे इज द रिसीट फॉर गवर्नमेंट. सिमिलरली ये रेलवे चलाने के वास्ते how much money is spent, either in the form of capital, that means asset creation के वास्ते, नहीं तो revenue expenditure, जो assets already है, those assets to be maintained. हमारा गाड़ियां चलाना है, we have to run the trains, and for running the trains, and what is the expenditure we will be incurring? That will be expenditure. So our expenditure, that is railway expenditure, is government expenditure. हमारा railway earnings है वो railway government का earnings है, जो railway revenue है वो government revenue है, जो railway का revenue expenditure है वो government का expenditure है. हमारा रेलवे जैसा और सारे डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट में. There are many departments, and all those departments also, their expenditure will be government of India expenditure, and their receipts will be government of India receipts. That means हर एक डिपार्टमेंट उसका receipts और उसका expenditure they will flow into government account. आखिर गवर्नमेंट अकाउंटिंग में जितना पार्ट्स होते हैं वो कैसा मेंटेन करते हैं, ये पूरे के पूरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, वेयर इट विल गो, वेयर इट विल बी पार्क्ड, दैट आल्सो वी विल नो. द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज दैट a systematic record of receipts and expenditure. Already I told you that there are many departments, but they have to follow uniform procedure, and accordingly they have to classify the receipts and classify their expenditure, and on cash basis they have to prepare. Cash basis माने तो actual जितना receipt हुआ है that only they have to show. So that is the main requirement of government accounting system. Now, I said government accounting का actual receipt जितना है, actual expenditure जितना actual disburse हुआ, that only we have to show. But government commercial accounting में क्या होते हैं, जितना total earnings आया है, जितना total expenditure किया है, that we have to tell. So how a link will be maintained? हमारा 100 rupees earn किया, listen this carefully, हमारा 100 rupees earn किया, वो गवर्नमेंट अकाउंटिंग में 100 rupees earn किया, मगर गवर्नमेंट अकाउंटिंग में अर्निंग से उसको लेना देना कुछ भी नहीं है. It is not worried about earning. How much is actually received? A 100 rupees से how much is received? Actual receipt कितना है? Say for example 90 rupees. So that 90 rupees we will be showing to government of India
that in this year 90 rupees is received. It is a receipt to government. But 100 rupees is not a receipt to government. As a commercial organization, 100 rupees we will see and 90 rupees we will list out, and baki ka balance kitna hai, that it will be shown and it will be watched till last pi is realized. This is on receipt side. Similarly, on expenditure side also, we have to maintain certain link heads to know actual disbursement. Similarly, certain link heads are required to know actual receipts on earning side. Now let us see those link heads. Government accounting और commercial accounting दोनों balance करते हैं. Indian Railway कैसा balance करते हैं? Let us see. The government accounts, you can have this. The government accounts record the expenditure only when actually disbursed and receipts only when actually realized. That is on cash basis. Say for example, हमारा बिल्स रिकवरेबल रजिस्टर होते हैं. हमारा बिल्स रिकवरेबल रजिस्टर में क्या होते हैं? हमें बिल बनाते हैं. जब बिल बनाते हैं, खाली मैन्युस्क्रिप्ट में रजिस्टर में लिखते हैं जो फर्म ये फर्म से फर्म ये से जितना अमाउंट होना बिल किया, that will be. So when it will be shown in the government accounting, only when it is realized. Suppose 100 rupee bill you have sent. So 100 rupee you will not show as a receipt. When you will show in a government accounting system, when actually 100 rupees check is realized. That is what the government expenditure actually when disbursed and receipts only when actually realized. That is on cash basis. Railway accounts are maintained on commercial basis outside government accounting. This already I told, recording the expenditure incurred or earnings accrued in a month or in a year, irrespective whether they have been actually paid or realized. That is on accrual basis. So this is how when to government we have to give on cash basis. When as a commercial organization we have to maintain on accrual basis. For that purpose, we have to maintain link heads. What are the link heads? The link heads are to be maintained between the two to show how much is coming to government of India from railway and how much actually spent by government on railway. Okay, this is how the need for link heads. Now, how many link heads will maintain? The link heads to know the link between commercial railway, commercial organization and government department, we maintain accounts by operating suspense heads. I said link heads, link suspense heads. So, कितना link suspense heads इस्तेमाल करते हैं? 4. 4 link suspense heads are maintained to maintain a link between government accounting system and commercial accounting system which railways follow. वो क्या होते हैं? One is demands payable. Another one is labor. ये दोनों हमें expenditure side link suspense heads मानते हैं. What are the two link suspense heads maintained in Indian Railways? The two link suspense heads of government accounting and commercial accounting. The two suspense heads are, one is demands payable and another one is labor. These two are maintained to record the actual disbursements, total disbursement and actual disbursement. ये जानकारी ले, to know this, we'll be maintaining two suspense heads. They are demands payable and labor. Demands payable is a suspense head we normally operate in the month of March.
Of course, Government of India now, our railway organization also, they are giving instructions to maintain demands payable wherever it is required, even every month also. But most of the zonal railway, we maintain demands payable in the month of March. Because in the month of March, our salary will not be disbursed in the month of March. Month ending में नहीं आपको credit नहीं होते हैं. It will be done on the next day, next year, I can say, next year. So in this year, is it actually disbursed? No. When it is not disbursed, we cannot show in government accounting. So entire amount we will be keeping under demands payable. That is suspense head. Link suspense heads. ये government account और commercial accounting का link suspense head expenditure side. Similarly, our suspense head expenditure side only will be maintaining, that we call it as labor. This labor suspense head, it is a subhead we will be operating under workshop manufacturing suspense. Workshops में हमें ये suspense head operate करते हैं. क्यों ये suspense head operate करना है? Because the month in the workshop, एक काम करने के बाद हर एक काम के वास्ते जॉब कार्ड्स होते हैं. वर्क ऑर्डर सिस्टम पे जॉब कार्ड्स होते हैं. ये लेबर का तो जो लेबर होते हैं, जो लेबर होते हैं, वो लेबर it should be on expenditure side. We have to maintain that. Labor on expenditure side, we will be maintaining, because on jobs हमारा पूरे के पूरे हमारा रेलवे का वर्कफोर्स है, वो लेबर है. वो लेबर का पेमेंट बाद में होते हैं, मगर वो महीने में जितना उन लोग काम किया एक जगह पे, उनका पूरा सैलरीज ये लेबर ये जॉब्स में हमें डालना है. ये जॉब्स में डालते हैं, मगर वो डिस्बर्स हुआ क्या? नहीं हुआ. ये कब हो रहे? बाद में हो रहे. तो तब तक ये लेबर का अमाउंट्स कहीं भी एक जगह पे रखना चाहिए. तो फॉर दैट पर्पस विल बी कीपिंग लेबर सस्पेंस हेड. दिस इज फॉर एक्सपेंडिचर साइड. Similarly, हमारा traffic account and demands recoverable, these are the two suspense heads we will be operating on earning side. So earning side में जैसा expenditure side दो suspense heads है, link suspense heads, हमारा earning side भी दो suspense heads होते हैं. वो है traffic account and demands recoverable. ये ट्रैफिक अकाउंट ये होते हैं कि हमारा रेलवे स्टेशन से जो भी हमारे अर्निंग्स आते हैं XYZ के रूप में आते हैं, वो पूरा डेबिट होते हैं. और जो भी रियलाइजेशन होते हैं कैश के रूप में होते हैं, दैट विल बी क्रिएटेड एंड देन द बैलेंस विल बी अनरियलाइज्ड अर्निंग्स. वो रिसीट्स एक्चुअल वो अनरियलाइज्ड होते हैं. ये अनरियलाइज्ड निकालने के बाद एक्चुअल कैश में जितना आते हैं वो रिसीट्स का बताते हैं, गवर्नमेंट अकाउंट का रिसीट्स होते हैं. अदर देन स्टेशंस, there are certain items, very important items, they will be also shown as the earnings. What are they? Other than stations, they are siding charges, interest and maintaining charges, and rents on buildings. So those charges हमें bill करते हैं, but that will not be immediately paid. So it will not be treated as an actual receipt. So जब actual receipt check आते हैं, तब we will see it as a demands recoverable.
that we will see as a demand, we will be showing that as a actual receipt. So till such time, till that firm pays that amount, interest and maintenance charges and rent on buildings, though item, other than traffic earnings, we will be operating one more suspense head, which we call it as demands recoverable. So jitna hame billing karte hain, so that will be there in the demands recoverable. Jitna cash checks check रूप में आते हैं, that we will be showing, and then that will become actual receipt. So balances जो है हमें carry forward करते हैं, और next month, next महीने, next year में we will be watching for recovery of that. So now there are 4 link heads we will be operating to maintain a link between government accounting system and commercial accounting system. They are demands recoverable, and traffic account on earning side, demands payable and labor on expenditure side. So itna जानकारी होने के बाद, now I will not show this because I already explained, and most important point is that government organization, government department, if it is working as a commercial organization, it has to follow certain essential features. Very important is that हमारा accounts हमें capital transaction और revenue transaction ये separate जानकारी होना चाहिए. We have to maintain them, capital transaction and revenue transactions separately. What are these capital transaction and revenue transaction? हमें जो हमारा earnings increase करते हैं, हमारा expenditure reduce करते हैं, उसके वास्ते हमें कुछ खर्च करना है. That will be known as capital expenditure. Already assets है, उसके ऊपर वो चलने के वास्ते to maintain or to repair, we have to incur certain expenditure. That expenditure we call it as revenue expenditure. This bifurcation is available in commercial organizations also, and we have to follow in government also. That is most important. Then capital and revenue accounts, at the end of the year, we have to maintain capital and revenue accounts statements we have to prepare, and these are prepared as a commercial undertaking to know in the annual report, and we also prepare block account, profit and loss account, and balance sheet at the end of the year as a commercial organization. How a commercial organization outside, how it will prepare, and we also will prepare in that way only. And similarly, as a government department, we have to, at the end of the year, we have to prepare finance accounts. We have to prepare finance accounts. जो statements हमें at the end of the year, जो accounts we maintain करते हैं, जो accounts हमें maintain करते हैं, we will call them as finance accounts. And these are prepared monthly, annually, for the purpose of presenting various transactions under prescribed heads will be maintained. For the monthly, what are the things which we will be maintaining? Very important is actual current, account current, monthly we will be preparing. These are finance accounts, part of finance accounts. So this is the essential features of the government accounting system. And one more point is that हमारा earnings, हमारा expenditure, जो भी है actual receipt and actual disbursed amount कहाँ जाता है? I said it will flow into government. हमारा receipts है, वो government का receipts होते हैं. हमारा expenditure है, वो government का expenditure होते हैं. वो कहाँ जाते हैं? The classification is this. हमारा government accounts, they are maintained in 3 parts. वो क्या होते हैं? As per Article 266 of the Constitution, central government have a fund which we call it as Consolidated Fund of India. Into this Consolidated Fund of India, हमारा all railway revenues, that means हमारा railway receipts,
will flow and all its expenditure, say Hamara railway expenditure, capital or revenue, it will be met when authorized by Parliament. So that means part 1 is Consolidated Fund of India, where our receipts will go and our expenditure is taken from that. And the government also will have a public account of India. That means Dusra public account of India. This is actually part 3. Part 3 is public account of India, into which all public money will received and dispersed or accounted for. Hamara public money, that means say for example Hamara security deposit, Hamara EMD, Hamara deposit works का पैसे, ये हमारा रेलवे का अर्निंग है क्या? नहीं, दूसरे का पैसे हमारे पास रख दिए हैं. We have kept that money with us. So those amounts, for that amount, our government will be acting as a trustee. So such case, these amounts will be kept under public account of India. That is part 3. And part 1 is Consolidated Fund of India. Part 3 is public account. And part 2 is Contingency Fund of India. This Contingency Fund of India, this is kept at the disposal of President for meeting the unforeseen expenditure on new services. अचानक हमें खर्च करना है, pending authorization from Parliament. Yes, we can make an application and then we can take money and then we can spend it. But that will be dispersed later on. That means for the money to take from Contingency Fund of India, prior Parliament approval is not required. बाद में Parliament का authorization लेते हैं and then that will be recouped. But to take money from Consolidated Fund of India, Parliament approval is required. So these are the 3 funds into which हमारा railway का receipts जाते हैं, हमारा railway का expenditure जो भी capital है, जो भी revenue है, these will go into that. So dear friends, I am stopping here because the next session also is there, and further we'll take up in the next sessions which I will be taking. Thank you. अगर आपका कुछ डाउट्स है आप बोल सकते हैं. Shall I unmute everybody, sir? You can ask. Yes, please unmute. Yes, Unmute, and I'm unmuting if anyone everybody. is having, let them raise a hand. If you have any doubts, please raise your hand one by one, and you can ask your doubts, please. अगर आपको कुछ doubts है तो आप हाथ उठा सकते, raise कर सकते. Then otherwise you can have unmuted you. सबको unmute किया मैं. You can just ask your question. If you have any doubts, please ask. Krishna, can you explain difference between demands recoverable and okay. Demands recoverable is purely related to commercial organization tara. We want to watch raise a bill and watch whether the amount is realized or not. That is called demands recoverable. So that is one of the link suspense heads which we are operating. Whereas demands receivable, it is not there. Actually, that name is not there. Actually, it is bills receivable. Bills receivable is almost, it is, we can say, perfect example of government accounting. We raise the bill, but we will not show in our earnings as a receipt. Only when we raise the bill, keep a watch in the watch register, and then we will, when the bill is paid by the party, then that amount we will show as a receipt. Then only it will be shown as a government receipt. So bills receivable is a perfect example of government accounting system, whereas demands recoverable is on accrual basis it will be, and it is a perfect example of commercial accounting system. There is no term called demands receivable. Demands recoverable or bills receivable.
Any other doubts, please? If you have, you can even write in the chat box also if you have any doubts. Yeah. You can write in the chat box also. I will check. Teach bilingual. Okay. Demands recoverable, demands receivable. Okay, that I explained. Okay, in the next coming sessions also we'll see, because there are some more general entry for salary. Yeah, because of time lag, I didn't tell. Actually, this demands demands payable in the month of March. Normally, what we will be doing is disbursement. It is not disbursed in the month of March. Therefore, we will be parking that money under demands payable. So, what we will be doing is demands payable. Final head, हमारा final heads है. For that final head, we will be debiting, and all our salary amount say 200 crores. That 200 crores, हमारा different subheads है ना, abstracts है. Abstracts, in that abstracts we will be debiting, and that 200 crores it will be credited to demands payable. So it is there. It is not dispersed. हमारा disbursement when it will be done? It will be done in the month of April. So when we do disbursement, and checks and bills credit will be given and debit will be given to demands payable. So that's how demands payable will be nullified. So this normally we operate only in the month of March. That too, when you write CO7, there is one code is there for demands payable operation. If you give that code, automatically that amount will be credited to demands payable. And when disbursement is done, again, to that extent, that amount will be debited to this demands payable. So generally, the demands payable will indicate the amount it was spent in month of March, but not discharged. So that 200 crores, when we are not discharged, when we prepare our account current, we will not show that expenditure in the month of March. Because actual disbursement only we have to show in government accounting. But we should know how much liability is there. So that to know that liability on accrual basis, we will be maintaining demands payable. Yeah, that general entry, it is there in my presentation. You can see that. Okay. Winner, should we close, because they have to go for chai and then join for next session? Yes, sir. Yes, sir. We'll close. And on some other day, again, when my presentation is there, again, we will talk on this. Right? Okay, sir. On behalf of IRIFM, I thank Shri Damodar Prasad, sir, for taking up the session on structure of railway accounts. Thank you, sir. Thank you so much. You have a break now. The second session resumes at 11:45. I request all of you to please log in by 11:45. Thank you all.